So we'll discuss today about the thermal comfort and the different consideration for the thermal comfortable conditions. What are the different aspects for the thermal comfort and how you can achieve it? So basically, while we are going through all this thing that how we can design a building in a comfortable manner, we have looked at several aspects, starting with the various climatic factors and then different strategies. We have learned about that there are concepts of sun orientation, there are concepts of the windrows diagram. Okay, so all these things help us to find out a solution scientifically that how you can plan the building and orient it. So what you have learned in your Vastu Shastra concepts, that is also that is nothing but the also science of orienting a building, and that is from the knowledge of our ancestors जो आपने वहां से गेन किया है उसके बेसिस पे आपने उसको हाईलाइट किया, आपने उसको नॉलेज लर्न किया और कंसेप्ट उसके समझे, right? So in Vastu Shastra there are the basic elements of the nature and you will plan the building according to it. Similarly, there are different strategies for orientation, like you in this particular course of building planning you have to deal with two kinds of orientation strategies for the building. The one you have already studied, that is the Vastu Shastra, and the second one is the sun consideration. I will discuss in next chapter what is sun consideration. Okay, so these are the concepts of orientation. If you go in deep, then you will find that these both things are same, both of these things are same. The meaning, the purpose for which we are doing this whole conceptual work is same, right? So again, if we come back to our topic, what we were studying in our last class, that is about the different climatic zones we have discussed on globally and locally, that is on India and on the world level basis. We have discussed a lot about the climatic zones. So again, I'm coming back to the topic, that is the thermal comfort. So if thermal comfort, if we talk about this particular topic, it is something which is which varies individually. That means for you, thermal comfort may be different. For me, thermal comfort may be different. So it depends on an individual's body, how they adapt the things. हर एक की बॉडी अलग अलग होती है और आप समझ सकते हैं कि क्योंकि बॉडी अलग अलग है, उसका रिएक्शन अलग अलग है, दैट मीन्स द थर्मल कंफर्ट लेवल विल ऑल्सो बी डिफरेंट. उसका जो थर्मल कंफर्ट का लेवल है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. While we were studying about the humidity parameter, I told you one thing, that our body has to work and has to release the energy, has to gain the energy. That process goes on. And due to that process, what will happen? A heat will produce. So it is the basic function of our body that it produces heat, right? Now, to adapt this heat and to make a comfortable living condition, that is our strategy for the building planning, right? So what we have studied in the concepts of the humidity, that also applied for the thermal comfort considerations. So thermal comfort, by means of thermal comfort, that maintaining that particular energy what you are releasing or what you are gaining for a comfortable living condition for your body. Now if we talk about an individual body, the thermal comfort level may be different. It may be different. There are different bodies, they behave differently, and that's why the thermal comfort level may be different. But on an average, the parameters will remain somewhere very similar, or in general we can say that we can generalize them, that the normal body temperature is this, the normal humidity should be in this range. Okay, so we can generalize them, but it depends on person to person within which you are studying. ओके, सो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग थर्मल कंफर्ट कंडीशन हो सकती है, बट इंडिविजुअल के हिसाब से हम स्टडी नहीं कर सकते किसी चीज को. तो आई हैव टू जनरलाइज देम, एंड व्हेन आई से जनरलाइज, दैट मींस वी आर असेसिंग द बिहेवियर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी. नॉर्मल बॉडी का क्या मीनिंग हो गया, अब वही यहाँ पे मैंने लिखा है, द कोर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. कोर बॉडी मींस द एक्सटर्नल temperature for your body, that is the 37 degrees Celsius, whereas the core body means the overall temperature of your body inside. Okay, so that should be 37 degrees Celsius, whereas the skin temperature, the external temperature, is 31 to 34 degrees Celsius. So these are the basic range. We are considering these characteristics for the general body. Okay, on an average, that we consider that
our body will behave similar in this range. Okay, so as we have to mark something reference line with which we can study the concept of thermal comfort, and that's why we have adopted the definition using the different values of temperature for a normal body. कि एक नॉर्मल बॉडी के लिए टेम्परेचर की क्या रेंज हो सकती है, ठीक है, और उसी को हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट जो होगा वो लगभग सभी बॉडीज पे एप्लीकेबल है, बट इन रियल वर्ल्ड इट इज समथिंग डिफरेंट, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है. सो दीज आर द टू फैक्ट्स. ठीक है. So human body produces heat like a machine due to various activities, and that is known as the metabolic process. The activities involved like sitting, running, eating, sleeping, all these activities are associated with the heat production or heat dissipation. Both of things are there, right? So this process goes on. The heat will cyclically it is produces more and more and more and more, and then you have to control this generated heat by the way you plan the building, right? In this way you have to discuss this concept. In this way you have to learn this concept. So if I talk about the different activities or the different phenomena by which the heat exchange will take place in a body, so there are major 5 different phenomena like this. There is one single equation for it that you can get it from the your code of the building, that is SP special publication. I will discuss this in the later slides. Okay, so you can see here the amount of energy, that is the 70 watt during the sleep and 700 watt during the heavy physical activity. So these are the change of the energy. You can see here that how drastic the change is. It varies on a large scale, that 70 to 700 watt it changes. Yes, but this diagram is associated what discussion I am doing here. इसको ध्यान से समझिएगा. Yes, so there are 5 different fundamentals like the M, RD, CV, CD, and EV, and with the help of this we are making an equation over there. This equation is called as the thermal equilibrium equation ideally. Okay, that means in ideal condition, if this equation or all these parameters are resulting as 0, that when you do the algebraic sum, by means of algebraic, that you have to consider the sign, the plus or minus. Okay, so when you consider the sign, when you do the algebraic sum, and if you are getting this overall or the remaining energy, change of the energy is 0, that means it is the very ideal condition for the body, that how much heat is generated over there is again balanced by the environmental conditions. So what are these factors? Firstly, we will look to these different factors. What is the meaning of M? What is the meaning of RD? ये factors क्या है? इनको समझते हैं पहले, ठीक है? ये diagram को देखते रहिएगा, मैं साथ साथ explain कर रहा हूँ. So there are different parameters. So starting with the M, that is the metabolic heat production. Metabolic means by the help of various activities what your body do. Sleeping, eating, running. Okay, these are the activities. So due to that, the change of energy will take place. Okay, so that is the metabolic heat production. Then RD is nothing but the net radiation energy. Radiation means what energy you are getting from directly from the sun. That is the radiation energy, radiation exchange over there. Don't forget that you will radiate some energy outside of your body also when you comes in contact with any object over there. So it can be positive, it can be negative. If you are gaining the heat over there, that means it is positive. If you are losing the heat, that means it is negative. So these signs are mentioning nothing but how you are whether you are gaining or whether you are losing it. Okay, so CV is convection, that due to the respiration process we know very well that some heat will exchange over there. While inhaling you will get some amount of energy over there. While exhaling you will release some amount of energy over there. That is due to the process of the respiration. Convection energy, convection heat exchange is due to that particular fundamental. Now if we talk about the conduction, CD, you can see this particular diagram for the better explanation of this parameter, that conduction plus minus. Conduction plus minus means the object by which with you are in contact. Like suppose if you are sitting by taking rest on a wall, then you are in, your body is in contact with the wall.
then some amount of radiation you are sharing with the wall. Okay, so that is called as conduction, and vice versa, the wall is also transferring some amount of radiation to you, so that is known as the conduction. So it may be possible that due to different objects, due to the chair, due to the stool, okay, or due to the table, due to the bed, there may be change of energy will take place. So that change of energy comes under the conduction process, right? Then lastly, it is the evaporation. Evaporation, by means of evaporation, that it is through your body. That I told you that in case of the uncomfortable conditions, using the humidity parameter, your body will lose some amount of its heat or radiations in terms of sweating activity. जो आपने देखा है पसीना आना, ठीक है? So with that scientific knowledge, you can consider that there is evaporation something from your body. That is always negative because it is releasing. Evaporation means it is releasing from your body, so it is going to be negative always, right? Whereas the other parameters are maybe positive or negative. One more thing, the metabolic heat production is always positive because you are doing some work, you are producing the energy, you are generating the heat over there. So it is always positive, evaporation is always negative, but the rest of things may depends on the nature, that whether you are uh, taking it outside or you're taking it inside. Okay, that means that whether you are releasing the energy, you are gaining the energy, it depends on that. ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने साइन कन्वेंशन यहाँ पे प्लस माइनस कंसीडर कर रखा है. So if we talk about the thermal comfort, that what is the thermal comfort scientifically? By definition, आप कैसे उसको define कर सकते हैं कि thermal comfort क्या होगा? उसके लिए यहाँ पे एक आपको definition दिख रही है, the condition of the mind. It is nothing but the condition of the mind that expresses satisfaction with the thermal environment is called as the thermal comfort. And this definition again you can see it shows that for individual body it may be different because it is a state of mind, it is a condition of mind. For you it may be different, for me it may be different, right? It cannot be same for both of us, right? So it changes. Yes, is सर there any doubt? हाँ बोलिए. सर एनर्जी रिलीज करना मीन्स नेगेटिव, Yes, yes. बट सर मेटाबॉलिक ये हीट है, इसमें भी तो एनर्जी रिलीज ही हो रही है वर्क वर्क करके. नहीं, यहाँ एनर्जी एनर्जी आपकी बॉडी जनरेट, यहाँ पे हीट से मीनिंग है, डायरेक्टली एनर्जी से मत समझे आप. हीट, जब आप काम करते हैं आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. व्हेन यू आर जनरेटिंग हीट देन इट इज पॉजिटिव. But when you are releasing the heat, like suppose you are in contact with a wall, then you are sharing some amount of heat of your body with the wall. That in that case it is negative. So in case of radiation, it may be positive, negative. But when you are doing some work, you are generating the heat over there. That means it is positive. क्लियर सर. Okay. So it is nothing but the condition of the mind. That is very important thing. So these are the different parameters which are related, and we have this equation which defines it very clearly. इस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा, राइट? सो यहां तक आपको समझ में आया क्या मीनिंग है थर्मल कंफर्ट का और कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर? ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर. यस सर. अभी से पूछ रहा हूं मैं. यस सर. यस सर. यस सर. Okay. Now, if we talk about the thermal comfort, then thermal comfort again depends on many factors. These factors are, it may be environmental, it may be personal, it may be contributing factors. Okay. Some of them, some of these factors are not needed to explain by my side. Some of the factors like contributing factors. See, when we talk about the heat generation or heat releasing, okay, so you can understand it very well that the food you take for your body or for your diet, okay, so that will again contribute to the heat generation over there. So it may be the food and the drink, the body shape, weight, gender, etc. So these things are not needed to explain. So these are some biological, from the biological principles also, right? So these are the contributing factors. These factors are nothing but the contributing factors. We know very well, if we take something very hot while we are eating, then it is
it is somehow influencing the overall heat of the body. And on the other hand, if you take a cold drink over there, it will going to somehow balance your overall heat generation over there. So in this way, the food we take, the drink we take will affect the overall heat generation. If we talk about the personal factors are those things which making it for the specific to the individuals. जैसा मैंने आपको कहा कि थर्मल कंफर्ट इज डिफरेंट फॉर यू एंड इज डिफरेंट फॉर मी, बट व्हाई इट्स डिफरेंट? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल फैक्टर्स. इन फैक्टर्स के कारण ये डिफरेंट है. क्या फैक्टर्स है? मेटाबॉलिक रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटाबॉलिक रेट आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन अवर द फिजिकल स्टेट ऑफ अवर बॉडी. क्लोथिंग, इट मे बी पॉसिबल दैट इफ यू आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट पर्सन, आप दो जनों को कंपेयर कर रहे हैं, एंड दे मे हैव डिफरेंट क्लोथिंग. One is wearing a heavy winter coat, one is on the other hand, let's say, is having a very slim clothing over there, and in that case it may be very different. The amount of heat generated will be different. State of health, the person who is sick, we cannot compare to the heat generation of that person with the person who is quite fit and good. Okay, because that disease may be possible that it influence the amount of heat generation over there. Whereas one more thing is there which I would like to explain, that is the acclimatization. Acclimatization means, आप में से कोई समझता है acclimatization क्या है? See, acclimatization, yes, कोई बोलना चाहता है कुछ? नो सर. ओके, acclimatization को हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज यू आर सिटिंग इन एन एसी रूम. ठीक है, आप एसी रूम में बैठे हुए हैं, जून का महीना है, और जैसे ही आप बाहर जाते हैं आपको पता है कि बाहर गर्मी बहुत तेज है. ठीक है, तो आप जैसे एसी रूम से बाहर निकलेंगे, आपको गर्मी जितनी वो तेज है उससे भी ज्यादा लगेगी. सपोज टेम्परेचर 36 का है, आपको 40-42 का लगेगा, क्योंकि एकदम से आप एक कोल्ड एनवायरमेंट से निकल के एक सडनली एक हॉट एनवायरमेंट में जा रहे हैं. तो दैट इज द एक्लाइमेटाइजेशन. एक्चुअल में टेम्परेचर 40-42 का नहीं था, बट आपको ऐसा फील हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि आप सडनली एक कोल्ड एनवायरमेंट से एक हॉट एनवायरमेंट में आपने शिफ्ट किया. दैट इज द एक्लाइमेटाइजेशन. इट मे बी वाइस वर्सा. आप किसी हॉट एनवायरमेंट से सडनली किसी कोल्ड एनवायरमेंट में जाएंगे तो आपको हो सकता है टेम्परेचर सडनली ऐसा लगे कि जितना है उससे भी कम आपको फील होगा. ओके, so these are the acclimatization factors. So these are the personal factors. So it depends on individual, where they are living, how their body will react, what are the physical state of their body. Okay, it depends on all these things. If we talk about the environmental factor, it depends. I already explained these factors to you, that air temperature, air movement, humidity, radiation, ये सब हमने पढ़ा है क्या होता है. So these factors also contribute to the heat generation over there, or heat dissipation over there. Okay, so in this way, these are the factors which actually affect the thermal comfort over there. Is it clear to you? थर्मल कंफर्ट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स उसके अंदर आते हैं, क्या इक्वेशन होती है, ठीक है, उनका क्या मीनिंग है, कॉन्वेक्शन का क्या मीनिंग है, कंडक्शन का क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है? यस और नो, और इज देयर एनी डाउट? यस सर. यस यस सर. सर. ओके, अब हम आगे चलते हैं. देयर इज वन थिंग, clothing, the effect of clothing. I would like to discuss this in detail, that if we talk about the effect of clothing, then there is something unit given to it also. जैसे आप वेलोसिटी को मेजर करते हैं, जैसे आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं, देर आर फिक्स्ड यूनिट्स. जब हम क्लोथिंग इफेक्ट को मेजर कर रहे हैं तो रिसर्चर जो हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की, उन्होंने क्लोथिंग इफेक्ट की भी कुछ यूनिट्स डेवलप की हैं. व्हाट आर दोज यूनिट? दीज आर दी क्लो वैल्यूज. ओके, सो क्लोथिंग वर्ड से ही क्लो बना है. दीज आर दी क्लो वैल्यूज. Okay, so क्लो वैल्यू 1 is equal to the amount of clothing required by a resting human to maintain the thermal comfort at a room temperature of 21 degrees Celsius. Okay, I'm repeating, a क्लो वैल्यू, जो क्लोथिंग वैल्यू है उसका क्या मीनिंग है उसको समझा रहा हूं मैं. क्लो वैल्यू ऑफ 1 is equal to the amount of clothing, कितने अमाउंट ऑफ, मतलब कि कितना क्लोथिंग करना चाहिए by a resting human. Resting human means it is in a position of rest, that means he is not doing any activity over there, to maintain a thermal comfort of the room temperature of 21 degrees Celsius. की बॉडी 21 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करे, उसके लिए कितनी क्लोथिंग उसको चाहिए होगी, दैट इज द क्लो वैल्यू 1 का मीनिंग ये है.
अब आपके दिमाग में ये यूनिट क्लियर हो गया होगा कि क्लो वैल्यू का क्या मतलब होता है. तो अगेन with the different clothing, different types of clothing over there, the flow value will changes, because at the same temperature you will take some different, you will observe it in a very different perspective because of your clothing, right? So the temperature is same, but the comfort you are obtaining will be different. हो सकता है कि उस टेम्परेचर पे आपको कंफर्ट ना मिले. Okay, so that is the thing which relate the clothing with the comfort. So these are the flow values. Now, if we talk about clothing, then for a naked body, it is zero. It is zero. Okay. For summer clothing, the light summer clothing, it is 0.6. Whereas for the business suit, example you can see in this image, for the business suit, it may be 1. For a downhill ski suit, it may be 2. Light polar gear suit, it may be 3. Heavy polar gear suit, you can see this light polar gear and heavy polar gear suit. So it may be 4. So depending on that, your flow value will change. And as the flow value will change, see here what is written over there. The flow value 1 means you are getting the comfort condition at 21 degrees Celsius at flow value 1. But as the flow value will increase, you will not feel comfortable at this 21 degrees Celsius. Okay, you need to remove the clothing over there just to make the comfortable condition. So from the definition perspective, अगर definition की हम बात करते हैं, this temperature will remain constant for you from the definition perspective. That 21 degrees Celsius is, we have taken it as a standard temperature for the measuring of the comfort condition over there. Okay, that is the effect of clothing. Is it clear? Now we come to the very important part of your building planning. अगर आप बिल्डिंग प्लानिंग की लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसमें आप आगे जाना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. विल कम टू इट. फर्स्टली लेट मी नो दैट इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू, द क्लोथिंग इफेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Then the bioclimatic chart. So what is the meaning of this bioclimatic chart? पहली बात क्या होता है? So it is nothing but a graph or a chart that shows the comparison of the temperature and the humidity in the environment. Right? So it is this chart that shows a relative comparison of relative humidity and the temperature. Now, how it is helpful for a building planner? Simply, it provides us the conditions for the comfort zone, and that's how it is very important for us. There is one presentation for this bioclimatic chart. I will share this with you. Give me some time because it required to share separately. If you want to look this video without disturbing, so it requires to share in a different manner. जस्ट अ सेकंड. चलिए ठीक है, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ. जो ये आपको बता रहे हैं मैं इसी को आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल के बताऊंगा. ठीक है, तो विल स्टार्ट दिस वीडियो. Represent on it the comfort zone by drawing in a rough circle. Okay. Nearer, we have what's called a bioclimatic chart. The bioclimatic chart clearly identifies the comfort zone. On the x-axis, we have the relative humidity. On the y-axis, we have the dry bulb temperature. The relative humidity is easy to plot. In the exercise of a few minutes ago, we had a relative humidity of 70%. The dry bulb temperature was 23 degrees. So 23 degrees plots about here. And we move across and we intersect with the 70% about here, which tells us that we're pretty close to the comfort zone. देखिए, बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में जो चीज हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि बायोक्लाइमेटिक चार्ट क्या है, उसको कैसे हम एडवांटेज ले सकते हैं. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कुछ वैल्यूज हैं, और वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि देयर इज टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसको हम बोल रहे हैं, बिकॉज द स्टैंडर्ड मेथड जो जिससे हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने का, दैट इज द ड्राई बल्ब.
ठीक है, ड्राई बल्ब मेथड। तो वहां से इसका नाम हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जो एयर टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए ड्राई बल्ब इंस्ट्रूमेंट जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट द टेम्परेचर ऑफ द एयर। नाउ the instructor here is taking one example, that if the temperature is 23 degrees Celsius whereas the relative humidity is 70, in that case whether does it lies in the comfort zone for that region, or it may fall somewhere outside of this comfort zone. Okay, so that's how you identify that whether this particular relative humidity or temperature is giving us the comfortable conditions in the building planning or not. ठीक है, तो ये साइंटिफिक चार्ट्स होते हैं। अब आप लोग इसको वापस से सुनिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। And it's a little bit out of what we would accept. This dash, dash, dash line indicates that it's borderline. The next example that we looked at was 65% relative humidity, and we looked at 25% dry bulb temperature. So the 25% plots here. आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हमने एग्जांपल लिया था 23 का और 70 का, ओके, सो इट इज फॉलिंग आउटसाइड ऑफ द कंफर्ट जोन और जस्ट एट द बाउंड्री ऑफ द कंफर्ट जोन, ठीक है। कंफर्ट जोन के अंदर भी ये जो डार्क एरिया है दैट इज गिविंग यू मोर कंफर्टेबल कंडीशंस, ओके, बट वेयर इज द लाइट एरिया इज समवेयर एट द वर्ज ऑफ प्रोवाइडिंग द कंफर्टेबल जोन, ओके। ये बाउंड्री कंडीशंस एक तरह से, so it is at the boundary, so we are now relating it with the other values, that is 65 and 26 or something different value for the temperature, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखने जा रहे हैं। We then plot across, intersecting with the 65%, and again, we're right on the border of the comfort zone. Again, it is on the border. The next example we looked at was 40% relative humidity. In this case, we were looking at a dry bulb temperature of 30 degrees. Moving across, moving up, we plot again right on the border of the comfort zone. Last example we looked at was 25% relative humidity. But in this case, we had a dry bulb temperature of 35 degrees. Again, plotting across and up, we can see that we are out of the comfort zone. But this is the beauty of the bioclimatic chart. नाउ यहाँ पे आपने डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज ली, आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटीज की वैल्यूज ली, आपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यूज ली, एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट ऑल ऑफ दीज आर फॉलोइंग एट द बाउंड्री कंडीशन। दैट मींस कंफर्ट अचीव हो सकता है बट इट इज नॉट अप टू दैट एक्सटेंट, ठीक है। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इट इज वेरी क्लियर टू यू विद दिस चार्ट कि आपको कंफर्ट जोन में आने के लिए, सपोज 40 डिग्री आपका अगर टेम्परेचर सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, देन यू रिक्वायर्ड temperature in this range so that it will fall in the comfort zone, okay। तो 25 तक अगर होता है और 40 तक आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन यू आर समवेयर इन द कंफर्ट जोन, ठीक है। इस तरह से हमको डिजाइन करना होता है, ठीक है। फर्दर देयर आर सम मोर थिंग इन द चार्ट, ठीक है, कुछ और चीजें हैं वो भी हम देखते हैं, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। It tells us how we can achieve a comfortable condition. By introducing air movement, we can pull the temperature down to a comfortable temperature, the comfort zone. And so in the case here of 25 degrees relative humidity and 35 degrees dry bulb temperature, by introducing air movement at 1 metre per second, we can pull the temperature down to something that
would simulate a comfortable zone. See, what the other things, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Okay. Yes, What the other things are there in this chart? See, these curves. इन कर्व को ध्यान से देखिए. 0.1 meter per second, 0.4 meter per second, 1 meter per second. Okay, so these are nothing but the air movement or the wind. Okay, so wind conditions कैसी है वहां पे, या कैसी होनी चाहिए कंफर्टेबल कंडीशन के लिए, ये यहाँ पे बता रखा है. नाउ अभी हमने एक एग्जांपल देखा, 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इफ दिस इज द कंडीशन ओवर देयर, देन इट इज समवेयर here at this curve. Okay, and this curve belong to a wind speed of 1 meter per second. Now what does it mean? That obviously if it is lying outside of the comfort zone, means it is not comfortable while we are having this condition, that 35 degrees Celsius, 25% relative humidity, that means it is uncomfortable for that region. जिस रीजन के लिए ये चार्ट बना हुआ है, हर रीजन के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड चार्ट इस तरह के बने हुए होते हैं आपके पास, तो वहां से आप स्टडी करते हैं. तो ये जिस रीजन के लिए बना हुआ है, वहां पे अगर 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और 35 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, तो ये कहीं से भी कंफर्टेबल कंडीशन नहीं है. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको कंफर्टेबल कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए आप रीड कर सकते हैं कि आपको 1 मीटर पर सेकेंड की विंड की रिक्वायरमेंट होगी. सो इट व्हाट डज इट सिग्निफाइज, ये जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी, इनका क्या मतलब है अभी आपको क्लियर होगा. सपोज इफ अवर वैल्यू वाज समवेयर रिलेटिंग टू दिस, अगर इससे रिलेट करती, देन वी नीड 0.1 मीटर पर सेकेंड वैल्यू ऑफ द विंड टू चेंज द कंफर्टेबल कंडीशंस. Okay, so that's how you can read this particular bioclimatic chart. Okay, further look the explanation, then I will discuss something more and then we'll complete this topic. The trouble is here we are again in this dash 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 line, which is borderline for human comfort. The beauty of the bioclimatic chart is we can see how we can use air movement to pull the temperature down. If we have 0.1 meters per second, we can pull it down into the comfort zone. The other beauty of the bioclimatic chart is it tells us when we have temperatures down to 10 degrees Celsius through to 20 degrees Celsius, how many watts per square meter need to be introduced. So जैसा आपने विंड के केस में देखा, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ द विंटर सीजन, इन केस ऑफ द कोल्ड रीजन्स, ठीक है, वहां पे क्या होगा, यू रिक्वायर्ड सम amount of the energy over there in watt per meter square, the radiation you will require, that means some amount of the energy from the sun, the radiation you will require to achieve the comfortable condition, especially when your temperature, air temperature is quite low, that is 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कितनी है, यहां से आप रीड आउट करें 30 है सपोज, और टेम्परेचर आपका यहाँ पे हम स्टडी करेंगे समवेयर लेट से इट इज 12, ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30 है. देन अगर आप ये लाइन देखेंगे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है 800. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 800? दैट इज watt per meter square. 800 watt per meter square is nothing but the radiation energy required to achieve the comfortable condition. यानी कि अगर आप 800 watt per meter square का रेडिएशन ले लेते हैं सन से, इन दैट केस यू विल कम टू द बाउंड्री ऑफ द कंफर्ट जोन. ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आया आपको व्हाट दिस सिग्निफाइज, व्हाट दिस एक्सप्लेन्स दिस थिंग्स, इज इट क्लियर? Yes, sir. yes, sir. Okay, so this is the bioclimatic chart, that is the use of the bioclimatic chart for the comfortable condition analysis for the buildings. Okay, so जब भी आप building planning कर रहे हैं in a very scientific manner, if you are studying this all this thing, then you require some bioclimatic chart over there, ताकि आप उस जोन की स्टडी अच्छे से कर सकें. कोई डाउट है इसमें तो आप पूछिए. नहीं तो हम आगे चलते हैं. स्क्रीन विजिबल है आपको, चले आगे.
Yes, sir. Okay, so I hope this lesson or this video was helpful to you. Now we are proceeding further. See this, जो भी आपने देखा वही चीज है, कंफर्ट जोन आइडेंटिफिकेशन. तो कैसे देखते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं वही चीज है, बट विद द क्लो वैल्यूज. ओके, सो दिस इज द इंटरनेशनल मॉडल दैट इज नॉट फॉलोड इन अवर कंट्री. ओके, सो इट इज द इंटरनेशनल मॉडल. जो आपने अभी देखा था वीडियो में, दैट इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल मॉडल. ठीक है, so relative humidity values are there, the dryable temperature is there, and you have to find out the point which is the coinciding point over there, and then what wind speed needed, what the radiation needed to achieve the comfortable condition, that we can study in a broad sense. Okay, but in Indian context or in Indian perspective, what we generally follow, that is the guideline given by the SP 41 1987. SP means the special publication. Okay, by the Bureau of Indian Standard, there is the special publication 41. These are the standards published by the Bureau of Indian Standard. ठीक है, तो इंडिया के अंदर हम इसको फॉलो करते हैं, और यहाँ पे किसी तरह का कोई कर्व हमको नहीं मिलता है. यहाँ पे सब कुछ चीज जो है वो हमको क्या कर रखा है, एक टेबल के अंदर एक्सप्लेन की हुई है. सी द डिजायरेबल विंड स्पीड फॉर थर्मल कंफर्ट कंडीशन, कि विंड की स्पीड क्या होनी चाहिए जब आपको थर्मल कंफर्ट अचीव करना है. अभी यही चीज तो हमने उसमें देखा था, चार्ट के अंदर देखा था, बट यहाँ पे क्या है, टेबल के अंदर है. ओके, नाउ हाउ टू रीड दिस टेबल. सही, यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं. ड्राइबल टेम्परेचर इज देयर, सो लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस वी आर स्टडिंग, एंड द ह्यूमिडिटी इज समवेयर 60%. ह्यूमिडिटी 60% है. ठीक है, तो 30 और 60 जहां ओवरलैप करते हैं टेबल में, दैट इज 0.06, एंड दीज आर नथिंग बट द विंड स्पीड. That means if the conditions are so that 30 डिग्री सेल्सियस वहां का एयर टेम्परेचर है एंड 60% वहां के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, देन यू विल रिक्वायर्ड 0.06 मीटर पर सेकेंड ऑफ विंड स्पीड फॉर द कंफर्टेबल कंडीशन. इज इट क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेबल? हाउ टू रीड दिस टेबल? Yes, sir. There are some more thing, that plus is indicating higher than those acceptable in practice. यानी कि इससे ज्यादा विंड एक्सेप्टेबल, 3.2 विंड 3.2 मीटर पर सेकेंड, दैट्स क्वाइट हाई रेंज ऑफ द विंड. ओके, सो इससे ज्यादा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. दैट मींस इट इज शोइंग बाय द प्लस, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, मींस थ्योरेटिकली इट कैन बी पॉसिबल, बट टेक्निकली this will not giving us the comfortable conditions over there actually. Okay, so इसको हम consider नहीं करेंगे. One more thing, the star is showing none. That means if the, let's say this example, the temperature is 28 whereas the relative humidity is 30 only, then star, that means the no wind speed can provide us the comfortable condition. ऐसा रिसर्च में कोई विंड स्पीड नहीं मिली जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए हमको क्या दे, कंफर्टेबल कंडीशन दे. ठीक है, दैट इज मार्क बाय दिस स्ट्रिक सिंबल और द स्टार सिंबल. ओके, so that is from the Indian standard. ये इंडियन स्टैंडर्ड से हमारे पास. This one is also the same table, but this is the minimum wind speed for just acceptable warm condition. जब विंटर सीजन है तो इसको रीड करें एक्सेप्टेबल वार्म कंडीशन के लिए, और जब आप उसकी बात कर रहे हैं स्लाइटली हॉट और समर सीजन की हम बात कर रहे हैं तो फिर ये रीड करना है. ठीक है, तो जनरली आप एक ध्यान में रखें, यही ध्यान में रखें, दिस इज इनफ फॉर यू. कहां से आता है, कैसे रीड करते हैं और क्या मीनिंग है उसका. ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. व्हाट इज द कंफर्ट, थर्मल कंफर्ट का क्या मतलब होता है, थर्मल कंफर्ट आपके और मेरे लिए अलग कैसे हो सकता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो थर्मल कंफर्ट को अफेक्ट करते हैं. उसके अलावा क्लोथिंग की क्या यूनिट्स होती हैं, क्लोथिंग को हम कैसे मेजर करते हैं, एंड right from there to the part of the bioclimatic chart, कैसे स्टडी करते हैं, how we can see theoretically the comfortable condition for any region. जहां पे भी आपको बिल्डिंग डिजाइन करना है वहां के लिए हम कैसे कंफर्टेबल कंडीशंस को रीड आउट कर सकते हैं. तो आई होप ऑल दिस थिंग्स. इज देयर एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी को? No, sir.